Hello, good morning to all of you. Today I will tell to all the teachers that how to use Zoom app as the lockdown is running up and the government has done Zoom app free, and I thanks to Zoom app also very much. So I will tell how to use Zoom app for teachers of like hosts. Like firstly you have to sign in the Zoom app. By signing our PMI will be there and the password will be there. In this PMI will be remain same and password we can change anytime. Like some people are confused in passwords, so we can put simple passwords. It's very easy, I think so. Meet and chat. In this new meeting is there, join is there, schedule is there, share screen is there. New meeting is for that. First I will tell you one by one. New meeting. In this meeting that the person can use this PMI and that passwords, and we should start the meeting. But in this we can send link also. By in schedule also send link. This my meeting has been started. In this participants we can mute all the participants about our choice. I can tick about the video tick. If I will put blue tick, they can't unmute themselves. Means they can't speak. So I will put like this only, and I will end meeting. And then join. Join means if if any student want to join this meeting, so he can also join by putting the passwords. Like I put this password and join meeting, and we have to enter the password. I entered the password. Sometimes it became the incorrect password. I think so, some network problem. Nothing happened. I think so, from that side only some problem is there. So in join only we have to put the PMIs and join meeting and enter the password. In schedule we can schedule the meeting new one. Like this I put on done. My meeting is scheduled. My meeting is scheduling. See, I think so this is no need. If you want to send by Gmail also, then you can send by Gmail. I think so my meeting is has been scheduled. I can start meeting. You can see that the meeting is started. By this we can do everything in participants. Now I will tell you main things. Mute all I tell you of firstly on share. शेयर पे आप माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव अगर आपके फ़ोन में है गूगल ड्राइव में भी शेयर कर सकते हैं, बॉक्स में भी, फोटो में भी, डॉक्यूमेंट। पर मुझे लगता है आपको ज़्यादा प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट में होगी, तो मैं डॉक्यूमेंट बताऊँ। ये फ़ोन के हिसाब से खुलेगा। जैसे मैंने ये पीडीएफ शेयर करनी है, ये पीडीएफ शेयर हो गई। इसमें हम बार बार ऐसे ऐसे करेंगे तो हम चैट बॉक्स कुछ भी देख सकेंगे। और अब ये मीटिंग की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब शेयर स्क्रीन, आप कोई भी मीटिंग कर शेयर स्क्रीन कर सकते हैं। ये पीएमआई बन जाती है और ये कॉन्टैक्ट्स और चैनल्स आ जाते हैं। इसमें सारे कॉन्टैक्ट्स, चैनल सब कुछ आ जाते हैं। और एक और बात, अगर आपको प्रोफाइल फ़ोटो चेंज नहीं करनी आती तो पहले तो आप सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोफाइल फ़ोटो और चूज़ फ़ोटो पे दबाएंगे। आप यहाँ से कोई फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी कोई फ़ोटो भी चूज़ कर सकते हैं। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दें, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।